first hormone which was discovered, it was secretin. Secretin was the first hormone which was discovered. Please remember, the term was coined by Starling, but the hormone was discovered by Ballas and Stelling. There is a difference, right? Right. Now, chemical nature, hormone can be protein in nature, it can be steroids in nature, it can be a fatty acid, it can be an amino acid. You must have an example of everything. Like you can be asked, give the name of the hormone which is proteinaceous in nature. It is the gonadotrophic, it is the thyrotrophic, it is the somatotrophic hormone. These three hormones, they are chemically proteins in nature. If I talk about steroids, cortisol, aldosterone, testosterone, estrogen, they all are basically steroids in nature. You might have heard also we must not take steroids. Whenever we go for any exercise or anything, the first thing which our instructor asks us is to take the steroids, right? Then we talk Right. about fatty acid derivatives in which we have prostaglandins. Then we have amino acid derivatives in which we have epinephrine and norepinephrine. Then we have short peptides, means they are not exactly the proteins, but these are the peptides in which we have oxytocin and vasopressin. Then we have the long peptides in which we have ACTH. You must know the example of everything. I think mostly, see, it will be easier for you because it is quite easy to learn the chemical nature. Now, physical and chemical specialities, they are not any specific. They are soluble in water. They are secreted in very small quantity. This line has been, it has came in need for one time. They have asked a assertion question that the secretion of hormones is always in a large quantity. No, the hormone is always in a very small quantity, right? Reason they have mentioned this line, that hormones, they are most reactive because they are released in large quantity. No, they are most reactive because they are released in very small quantity. Then the next point which is important, they are destroyed after they are used. They are soluble in water. They cannot be stored in the body. Only one hormone can be stored in the body, and that is thyroxine. Then we must know that there are liver and kidneys which separate them from the blood and they decompose it. They are not changing their chemical nature. They are not participating in the metabolic activities. Only they are controlling it, right? Then this is just a table. You can go through it, that what is the difference between hormone and enzymes. Usually we study that enzymes, they also speed up the reactions, right? And they have very high molecular weight while they have very low molecular weight. They are only proteins. They can be steroids, they can be proteins, they can be peptides. We have seen right now, right? They are used up in their reaction. They act in very low concentration. Okay, these points are quite important. Then we talk about the mechanism. If I talk about the mechanism, first of all, we must know that they enter inside the bloodstream. They go and act to any target organ. We have two types of hormones. See, the categorization of hormones is on the basis of different categories, whether they are soluble in water or not, whether they are soluble in lipids or not. So if I talk about water soluble hormones, usually you will see it will be a glycoprotein, glycogen, glucose, right? If I talk about a lipid soluble hormone, usually you will see the steroid hormones are the examples. Then, if I talk about the steroid hormones, usually what happens? They enter the target cell. First, they enter the target cell. Then, in the target cell, they combine with the receptor. They combine with the receptor and then they go to the cytoplasm. They have gone to their target cell, they are binding to the receptor, and then they are going to the nucleus and doing their action. They are not able to go directly into the nucleus, right? So now whatever RNA protein is required, they will make it. While if I talk about thyroxine hormone, thyroxine, triiodothyroxine, you will see
What they will do, they will go inside the nucleus, they will increase the transcription rate of the transcription, because they can directly enter inside the nucleus. They can directly enter inside the nucleus because their protein, their receptor is on the chromosome only. So that is why they are intranuclear in nature. Okay. Then we will talk about some another, but I want you to give you 2 minutes to go through this much part. I'll just take the notes. Sir, in the chemical nature of hormones, should I just write down the examples? Yeah. Examples means you must know that the example of a protein is thyrotropic and somatotropic. Like, see how they will ask you. Following hormones are proteinaceous in nature: gonadotropic, thyrotropic, somatotropic, and cortisol. So in that,
they will give you an option that any three, any two, any four. So you must know that cortisol is not proteinaceous in nature. Usually it becomes very easy because we as a human being know very properly that how many are the steroids present, right? We all know, we all have an idea, we all know about Yes. gym and everything. So nowadays steroids, they are very common for building mass and everything. So that is why you, and fatty acid derivative you have to learn prostaglandins. Neil, are you available from our class will get over at 4:45, right? Yes. Are you available? Like, if you want, I can give you the test in continuation also till 5:45. We can have the tech class if you want. No, I'm okay with it. I'm okay with it. Sorry? I'm okay with it. Okay, you can give the test, right? Yes, yes, I Okay. can. Okay. Or else we have that other class at 6 o'clock, right? Today. तो उसमें ही कर सकते हैं क्या? So like at the end. Okay, no, it's your wish. Means I was asking that, see, what I will do, actually, I will teach you in continuation for half an hour, and only for Okay. half an hour I will give the test. So that's why I was thinking in continuation I will teach you so that we can complete the chapter, means we can cover the chapter, and for half an hour you will have the test. Right? It is actually, it's a revision come test only to know, right? The main test you will be having next week. And Okay. please be sure that after the class you are messaging me the chapters, right? Okay. 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 Sure. See what you can do, like the chapters which you have done with me. And a part of it, if you think that you are confident in any other chapter, so you can message me those chapters also. I will make a combined paper of all of them. Right? Okay. Okay.
Yes, disorder. Now you want to read this page, right? Yes. Yes, disorder.
Yes, teacher. Done. Okay. So we have done the two hormones which have the interaction, or I can say they can easily pass through the plasma membrane. वो आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो पास कर सकते हैं और जाकर के अपना काम करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक रह सकते हैं। इसमें से बेस्ट एग्जांपल हमारा है टायरोसिन काइनेज। इसमें इंसुलिन हार्मोन जो है वो खाली सेल मेम्ब्रेन तक जा पाता है। आपको इंसुलिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दो सब यूनिट्स का बना होता है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली क्या करता है, बेचारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और वहीं पर उसका रिसेप्टर होता है, वो कहता है बस तुम्हें यहीं तक आना है, तुम्हें अंदर नहीं जाना है। राइट। सो बेसिकली द इंट्रासेलुलर पोर्शन ऑफ द बीटा यूनिट्स, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं एक तो इसकी अल्फा चेन है और एक इसकी बीटा चेन है। जो बीटा चेन है वो क्या करती है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। टायरोसिन काइनेज का मतलब होता है, काइनेज का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। राइट। तो और एटीपी बनाने के लिए इनको कहीं से भी फॉस्फेट ग्रुप तो चाहिए ही होगा, तो वो होता है टायरोसिन जो देता है। तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली टायरोसिन काइनेज जो है, इंसुलिन जो है वो खाली से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती है। अब आपको पता क्या होना चाहिए इसमें, पता आपको ये होना चाहिए खाली एग्जाम्पल्स कि कौन से अंदर तक जा पाते हैं। तो ज्यादातर स्टेरॉइड्स का एग्जाम्पल आता है कि स्टेरॉइड्स अंदर तक जा पाते हैं और हमारा थायराइड हार्मोन भी अंदर तक जा पाता है। बाकी जो हॉर्मोन्स है जैसे कि इंसुलिन हो गया, एफएसएच हो गया, टीएसएच हो गया, पीटीएच हो गया, एलएच हो गया, जितने भी बाकी के हॉर्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन के पास जाते हैं। जैसे कि हम आपके घर के दरवाजे के पास आ जाएं, आपका एक गार्ड खड़ा होगा, वो कहेगा तुम यहीं खड़े रहो, बाकी का काम मैं करूंगा। तो आई वॉज द प्राइमरी मैसेंजर एंड ही इज द सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तो ज्यादातर चाहे एड्रेनालिन हो चाहे इंसुलिन हो, इसका जो रिसेप्टर प्रोटीन होता है ये हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही बन जाता है, जहां पर प्रोटीन और रिसेप्टर दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। उसके बाद कोई ना कोई सेकेंडरी प्रोटीन होता है, कोई सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो कि मैसेज को लेके जाता है। कहीं पर वो जी प्रोटीन हो सकता है, अभी हम पढ़ेंगे साइक्लिक एमपी भी होता है। ये डिपेंड करता है भाई, हर घर का गार्ड अलग होता है, तो इट डिपेंड्स। राइट। जो जी प्रोटीन है उसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली वो जीटीपी को यूज करता है काम करने के लिए। ज्यादा डिटेल में आपको और ज्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा, ऐसे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन अंदर तक तो जा नहीं सकता। ये क्या करेगा, ये दरवाजे के पास जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। जी प्रोटीन एक्टिवेट का मतलब है भाई उसको तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो उसको एनर्जी कौन देगा, जीटीपी देगा। जीटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप एटीपी को दे देगा, जिससे एटीपी ब्रेक होगा और क्या बना लेगा, साइक्लिक एएमपी। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक एएमपी। तो ये बेसिकली एक सेकेंडरी मैसेंजर है। राइट। इसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, इट इज एडिनाइलेट साइक्लेट। बस आपको इसमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि कौन से हॉर्मोन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस तक जाते हैं, कौन से हॉर्मोन्स न्यूक्लियस तक आ पाते हैं। राइट। और कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स के नाम पता होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको जी प्रोटीन बताया, मैंने आपको साइक्लिक एएमपी बताया। राइट। नाउ सी दिस आई वांट टू टेल यू, यहाँ पर हार्मोन खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ पा रहा है और वो सेकेंडरी मैसेंजर बाकी सारे काम कर रहा है। यहाँ पर ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये खुद अंदर जा रहा है। मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद जाऊंगी अपनी बात कहने के लिए। तो अंदर जाने के लिए मेरे पास ताकत भी तो होनी चाहिए उस मेम्ब्रेन को तोड़ के जाने के लिए। तो जो ईस्ट्रोजन्स होते हैं, जो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, वो खुद जाते हैं न्यूक्लियस के पास कि नहीं मैं अपना मैसेज खुद दूंगा। तो आपको ये एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ये डायग्राम नीट में आ चुके हैं। कैसे आए, उन्होंने आपसे पूछ लिया था। उन्होंने यहाँ पर बेसिकली जो कि ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो उन्होंने यहाँ पर आपसे लेबलिंग पूछी थी, ये वन लिखा हुआ था और आपको बताना था कि कौन सा हार्मोन है। राइट। जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो इंसुलिन भी लिख सकता है, जिसको नहीं पता है। राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट्रोजन है। Okay, now, so what is happening? Basically, the cyclic AMP, which is a secondary messenger, it is going into the cytoplasm. वो दूसरे प्रोटीन से कह रहा है भाई प्रोटीन तुम एक्टिवेट हो, दूसरा प्रोटीन तीसरे प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है।
क्यों एक्टिवेट कर रहा है? क्योंकि एग्जैक्टली exactly वो क्या चाहता है, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करना चाहता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के लिए। तो आपको पता है जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजन का ब्रेक होना। भाई ऐसा तो होता नहीं है कि जब हमें एनर्जी चाहिए होती है हम खाना खाने लगते हैं, नहीं, हमारी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी होती है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। So this glycogen, it breaks down and it breaks and it gives energy in the form of glucose. Right? ना, अब ये आपको मैकेनिज्म्स दे रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स बताया था, एसिटाइल कोलिन, मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स बताए थे। तो ये कह रहे हैं कुछ लोकल हॉर्मोन्स भी हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल तो जी प्रोटीन बताया, जो किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज को। फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करता है बेसिकली, पीआईबी, फॉस्फोराइड इनएसिटॉल बिसफॉस्फेट को ब्रेक करता है। ये आपको नहीं पता होना चाहिए, राइट? ओ, बस आपको पता क्या होना चाहिए कि हाँ, IP3 और डीएजी मैकेनिज्म में IP3 वाटर सॉल्युबल होता है, ये आराम से साइटोप्लाज्म के पास जाता है और ये सारा काम करता है। कैल्शियम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचाना है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना है, भी सिग्नल आ गया मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने हैं। तो दीज आर द सेकेंडरी प्रोटीन्स और द लोकल हॉर्मोन्स विच आर प्रेजेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एसिटाइल कोलिन तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट? डू यू रिमेम्बर इट वाज अ केमिकल व्हिच वाज बीन रिलीज फ्रॉम द न्यूरॉन्स। और एक सोमैटोस्टैनिन है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, मेम्ब्रेन में हार्मोन रहता है, वो क्या करता है, वो एक्टिवेट कर देता है काइनेजेस को, जिससे कि दूसरे प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट? दिस तरीके से। नाउ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोन के पास प्रेजेंट होता है विच इज सेला ट्यूरकिया, राइट? उसके बाद ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक से जुड़ा होता है जिसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए जो इसका, इसमें 3 चीजें होती हैं, पार्स डिस्टालिस, ट्यूबरालिस और इंटरमीडिया। इन तीनों को मिलाकर के हम एडिनोहाइपोफिसिस कहते हैं। एडिनोहाइपोफिसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफिसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट? तो ये एक्चुअली मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि एक बार एंटीरियर पिट्यूटरी क्या मिलके बना है ये पूछा गया था, हो सकता है इस बार पोस्टीरियर पिट्यूटरी आ जाए, राइट? नाउ अब हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी जैसे कि नाम ही पता चल रहा है कि ये कौन से सेल से निकलता है, सोमैटोट्रॉफ सेल से। इनका काम है माइटोसिस करना, ग्रोथ करना, फैट का मेटाबॉलिज्म करना। भाई फैट जब ब्रेक होगा तभी तो हमारी हाइट बढ़ेगी, जब प्रोटीन्स हमारे सेल्स बॉडी के एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो हमारी मसल्स ग्रो करेंगी, जब हम ग्लाइकोजन को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी लेंगे, तभी तो हम लोग कहते हैं ना खाओ तो बढ़ोगे, जो खाएगा ही नहीं वो नहीं बढ़ेगा, राइट? तो ये सब एब्जॉर्प्शन ग्रोथ ये ऐसे ही करा रहे हैं, राइट? अब प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी इनका हाइपोसिक्रीशन होने लगता है, बॉडी में कमी हो जाती है या बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं, तो डेफिशिएंसी की वजह से ड्रॉफिज्म इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हाइपर सिक्रीशन की वजह से गाइगैंटिज्म, कई बार ये आ जाता है, राइट? कि हाइपर गाइगैंटिज्म एंड एक्रोमेगाली इज कॉज ड्यू टू डैश। अब इन्होंने ग्रोथ हार्मोन के अलावा कोई दूसरे हॉर्मोन्स के नाम दे दिए। एक और बात ध्यान रखनी है, नीट में कभी भी ग्रोथ हार्मोन लिख के नहीं आता, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन ही लिख के आता है, राइट? दे नेवर राइट ग्रोथ हार्मोन, वो तो इजी कर देगा ना आपका काम। सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, तो आपको ये नाम जरूर पता होना चाहिए, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है? दिस नहीं, यू कांट एक्सपेक्ट इन नीड कि आपको ग्रोथ हार्मोन वो लोग बोले, नो। उसके बाद बेटा दूसरा हार्मोन है TSH। कहाँ से निकलता है, इसका क्या काम है, हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड से आकर के कह रहा है भाई हाँ, इसको यहाँ पर थायराइड ग्लैंड तो है, इसको कब काम करना है, इसको सिग्नल तो अल्टीमेटली ब्रेन से ही मिलता है, राइट? कि अब तुम्हें काम करना है। ब्रेन में कहाँ है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं जो कि उसको सिग्नल देते हैं थायरॉक्सिन निकालो।
तो बेसिकली ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है TSH। आजकल आपने देखा होगा, आजकल बहुत लोगों को, मतलब हर पांचवें इंसान को थायराइड का प्रॉब्लम है। राइट, हाँ। ही इज अ थायराइड पेशेंट। दिस हार्मोन की बड़ी कमी होने लगी। क्यों? क्योंकि ताजा नमक, अच्छा नमक भी नहीं मिलता, अच्छा पानी नहीं मिलता, पानी में मिनरल्स नहीं मिलते हैं। थायराइड, TSH हार्मोन के लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो नहीं मिलते, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ACTH हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, उनको एक्टिवेट करता है, भाई काम करो काम करो काम करो। FSH, मेल और फीमेल में सेल्स बनाता है, फॉलिकल्स कहते हैं उसको। फीमेल्स में oogenesis करने का, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस करने का। राइट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये कौन सिक्रीट करता है? फॉलिकल्स सिक्रीट करते हैं। फॉलिकल्स कब सिक्रीट कर पाते हैं? जब FSH कहता है। राइट, FSH कहता है कि भाई ईस्ट्रोजन निकालो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं आपको दूसरे नाम बेटा इसलिए बता रही हूँ, कई बार नीट में दूसरे नाम आ जाते हैं। राइट। इनका काम है, गर्ल्स में होता है ओव्यूलेशन करना। ठीक है, ओव्यूलेशन जब हो जाता है तो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। LH हार्मोन का पहला काम है ओव्यूलेशन करना। उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, वो भी कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। मतलब पहले LH हार्मोन ने कॉर्पस ल्यूटियम बनाया, कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन बनाया। ठीक है, तो यानी कि प्रोजेस्टेरॉन भी कब बनता है? जब कॉर्पस ल्यूटियम ही उसको बनाता है। ठीक है, एक सिग्नल आया, दूसरा चीज हुआ, दूसरा सिग्नल आया, तीसरी चीज हुआ। मेन में LH हार्मोन जो है उसको हम ICCH कहते हैं। ये बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल से बनता है और टेस्टोस्टेरोन बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक्चुअली मुझे तो ये कहना चाहिए कि इन ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसकी कोई भी ऐसी लाइन ही नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हर लाइन नीट का एक क्वेश्चन है। उसके बाद ल्यूटियोट्रोपिक या प्रोलैक्टिन, ज्यादातर प्रोलैक्टिन का नाम आता है। ये क्या करता है? ये खाली मिल्क का प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। राइट, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन। ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन को, और इट मेनली इनहिबिट्स द प्रोलैक्टिन हार्मोन। नॉर्मली हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन इनहिबिटर। तो यानी कि ऐसा नहीं है लैक्टेशन खाली होना है, लैक्टेशन स्टॉप भी होना है, तो एक हार्मोन उसको इनहिबिट भी कर रहा है। ठीक है, Teacher, just 1 second. The screen is glitching again. Like that और time, I'll just you can't restart see the the. you can't see the screen. Not anymore. I'll just restart the laptop and just join again. Okay, and then I will give you time, you can go through it, right? Right. Just 1 second.
Wait, I'm connecting with him. He's again left. Yeah, sir, I have joined back right now. I'm on my phone abhi. So Okay, no problem. You can see the screen, right? You can see the screen, right? yes, I can see the screen. Yeah. From here only you have to write. Uh, yes, yes, I think so. Yes. This one. This one.
Yes, teacher, done. Yes, teacher, done.
Yeah, teacher, done. Yeah, teacher. For this diagram also one time the labeling has came in which you have Okay. to label the hypothalamus, the anterior pituitary and the posterior pituitary, right? So you Right. must know Right. the position of anterior and posterior pituitary. Okay. Yeah, teacher, done.
Yes, teacher. Okay. So as I told you, prolactin, you must know that the milk producing hormone, it is the prolactin hormone. Usually it becomes active after pregnancy only. After Okay. pregnancy, how does it comes to know that now it has to secrete the milk? There is a high level of estrogen and progesterone. At that time, the lactation is inhibited. So basically, prolactin hormone, it increases until its time, and when the levels of estrogen and progesterone, they are increased, it is inhibited. Only this point you must know. Then once there is the expulsion of the placenta, means when the baby comes out, there is a decline in estrogen and progesterone. जब estrogen and progesterone ज़्यादा होंगे तब ये नहीं secrete होगा. जब ये कम होंगे तब secrete होगा. It is just for your understanding. कभी कभी भी इसके ऊपर assertion reasoning questions आ सकते हैं. Right? Then what else you must know? Dopamine इज अ एक्टिव अमीन या ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बेसिकली लैक्टेशन को इनहिबिट करता है. कहने का मतलब है नाउ डेज देर आर मेनी गर्ल्स हु आर टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स और यू माइट हैव सीन दे टेक अल्कोहल्स और दे टेक द ड्रग्स, राइट? इनडायरेक्टली देर इन दैट केस यू विल सी कि उनके में प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी हो जाती है. दे कांट फीड देयर बेबी. So what is the problem? Because they were somehow they were taking dopamine or any this kind of neurotransmitter from outside. वो smoking कर रही थी. आपने सुना होगा smoking नहीं करनी चाहिए pregnancy में. Have you heard Neil all these precautions? Smoking या कोई भी drugs नहीं लेने चाहिए, antidepressants नहीं लेने चाहिए. ये सब medicines बड़ी Yes. ही means they are very harmful for the baby. Why they are harmful? Means actually baby को वो mentally तो impact डाल ही रही हैं. उसके अलावा these things they are also impacting. It is the breast is not able to prepare itself. These are the problems, right? Right, right. Then now, in the mid from the middle lobe of the pituitary gland, there is nothing else. Only you must know that the middle lobe of the pituitary gland is known as pars intermedia, where we have MSH hormone, which basically it in the man you will see that basically it synthesizes melanin, the skin pigment, right? Now just opposite to it, melatonin, it also is secreted by the pineal body. So we have seen that melanin is compulsory for the dark complexion, right? We have one more pigment that is melatonin, which is secreted by the pineal body. Why I have marked this? Don't get confused. If they are asking melanin, then it is secreted by melanocyte stimulatory hormone. If they are asking melatonin, it is secreted by the pineal body. खाली इतना आपको पता होना चाहिए. उसके बाद hormone releasing factors of hypothalamus. We always say that the hormones are released by the anterior pituitary. राइट. सो एंटीरियर पिट्यूटरी पूरा कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन कब रिलीज करेंगे, कितना करेंगे. ऐसे नहीं कि हर वक्त थायराइड को स्टिमुलेट कर दिया जाता है कि अपना काम करो. नो, we have growth hormone releasing factors, we have thyrotropin releasing factors, we have gonadotropin releasing factors जो बोलते हैं कि जाओ follicles को stimulate करो, जाओ LH को secrete करो, जाओ ग्रोथ को रोको. ग्रोथ को रोकने के लिए भी खाली स्टिमुलेट नहीं करना, उसको रोकना भी है. प्रोलैक्टिन को खाली स्टिमुलेट नहीं करना, उसको रोकना भी है. प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर के लिए डोपामीन is a very important content. Melanocyte releasing factor. So basically, all these factors are released from the hypothalamus. Now we have the posterior pituitary. एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एंडिंग्स में थोड़ी स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम हरिंग बॉडीज कहते हैं. हरिंग बॉडीज कई बार नीट में आ चुका है. बस आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, उसके पोस्टीरियर पार्ट से. देन
खाली 2 हार्मोन्स इसमें आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एक तो वैसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्साइटोसिन। वैसोप्रेसिन क्या करता है, हमारी टॉयलेट में कितना पानी जाएगा, that is also being controlled. So basically ADH or the vasopressin or the antidiuretic hormone, it increases the reabsorption of water. वो चेक करता है कि कलेक्टिंग डक्ट में, जो किडनी का नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट होता है, उसमें जितना ज्यादा पानी वो एब्सॉर्ब कर सकता है, इट absorbs so that the amount of urine is controlled. जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनको टॉयलेट भी बहुत ज्यादा होती है, जिनको शुगर हो जाती है उनको भी टॉयलेट बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, उनकी बॉडी में ये एडीएच हार्मोन ही गड़बड़ होने लगता है, राइट। अगर हमें कोई भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, टॉयलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में एडीएच की ही टेस्टिंग होती है। देन एडीएच का अगर हाइपोसिक्रीशन होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर हाइपोसिक्रेशन है तो यूरिन बढ़ जाएगी, इसको हम डायूरेसिस कहते हैं। इंसान अब टॉयलेट ज्यादा जाएगा तो प्यास भी ज्यादा लगेगी, राइट, और इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस भी कहते हैं। हाइपर सिक्रेशन में ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। देन वी विल टॉक अबाउट oxytocin. Oxytocin, only one thing which you must know, parturition hormone. बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे ये काम होता है। क्या होता है, यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस लाने के लिए ये निकलता है, ओनली एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ओके, नथिंग एल्स, ओनली द मिल्क। लेकिन दो चीजें हैं, एक मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, दैट वाज द प्रोलैक्टिन हार्मोन, राइट। मिल्क इजेक्ट करवाने के लिए ऑक्साइटोसिन हार्मोन होता है। एक तो पार्चुरेशन बच्चे की डिलीवरी के लिए, दूसरा मिल्क इजेक्शन के लिए, राइट। देन आजकल इंजेक्शन ऑक्साइटोसिन के लगते हैं काउज और बफेलोज में भी, सो दैट देयर कैन बी अ मिल्क रिलीज। आपने सुना होगा गाय के इंजेक्शन लगाया, तो कौन से हार्मोन का लगाया, ऑक्साइटोसिन का लगाया। देन मुलर्स ऑर्गन होमोलॉगस टू पिट्यूटरी। होमोलॉगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। तो मुलर्स ऑर्गन जो लोअर वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं, उनका वही काम होता है जो हमारे केस में पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। नाउ वी विल कम टू द थायराइड ग्लैंड, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ऑब्वियसली ये नेक में प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। उसके बाद ये इस्थ्यूमस से कनेक्टेड होता है, दिस इज द इस्थ्यूमस। एंडोडर्मल इन ओरिजिन, राइट। बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं इसमें। यही एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि यूजुअली इनएक्टिव स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, बाकी सब तो एक्टिव स्टेट में ही प्रेजेंट रहते हैं। देन उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए इसमें, अगर इसकी यूजुअली आपको दिस थिंग यू मस्ट नो दैट थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत होती है। नॉर्मली फॉर वन डे वी नीड 200 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन इन अ डे। अगर डेफिशिएंसी हमारे खाने में आयोडीन की कमी है, राइट, तो गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, दिस यू मस्ट नो। ज्यादातर गोइटर आपको माउंटेन्स वाले, जहां पर पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वहां पर थोड़ी आयोडीन की कमी होती है पानी में, इसीलिए वहां पर गोइटर ज्यादा देखा गया है। वाई थायराइड वी आर टॉकिंग सो मच, थायराइड भी हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम रहता है वो हमेशा अपने आप को थका महसूस करते हैं। क्यों, वो जितना भी खा लें उनको एनर्जी खाने से नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। उनका बीएमआर मतलब बेसिकली बॉडी टेम्परेचर, आप देखोगे वो या तो बहुत मोटे होते हैं या बहुत पतले होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ भी बैलेंस ही नहीं होता, उनका बीएमआर डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए हमें थायराइड ग्लैंड चाहिए। इवन मींस फॉर